माननीय सभापति महोदय, संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 के द्वारा त्रिपुरा राज्य के दारलोक समुदाय को कुकी समुदाय के उपजाति के रूप में सूचित करने का प्रस्ताव है। देश के पूर्वोत्तर में स्थित त्रिपुरा राज्य में जनजातीय समुदाय की संख्या लगभग 11,66,000 है, जो जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के 31.76% अनुमानित है। दारलोक समुदाय को सूची में शामिल होने के पश्चात इनको भी जनजातीय समुदाय के रूप में एक पहचान मिलेगी। कुकी समुदाय देश के पूर्वोत्तर राज्य में एक प्रमुख जनजातीय समुदाय है और दारलोक समुदाय को इस सूची में शामिल होने के पश्चात त्रिपुरा राज्य में कुकी समुदाय के 18वें उप जनजाति के रूप में इसका समावेश होगा। त्रिपुरा राज्य में 19 प्रमुख जनजातियां हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुकी समुदाय के उपजाति दारलोग को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने संबंधी विधेयक में आज राज्यसभा के माननीय कई अनुभवी सांसदों के सुझाव आए, विचार आए। मैं उनके सुझाव का, उनके विचारों का सम्मान करती हूँ। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी समाज की संस्कृति, उसकी परंपरा, उसकी समस्याएं एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए उनकी भलाई के लिए, वो जिस क्षेत्र में रहते हैं उन क्षेत्रों के विकास के लिए, उनके संस्कृति और परंपरा की रक्षा के लिए 1999 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग से मंत्रालय का निर्माण किया। इस सदन में मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जनजाति कार्य मंत्रालय और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए भारत सरकार के जो 41 मंत्रालय हैं, अपने अनेक योजनाओं के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों के विकास और अनेकों इस योजनाओं के माध्यम से उनके विकास और भलाई का काम कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की सदस्य मेरी बहन फूलो देवी नेताम, मानिक शाह, शांतनु सेन, मोहम्मद अब्दुल्ला, ममता मोहंता, बी लिंगायत यादव, अयोध्या रामी रेड्डी, एम थब्बी डुराई, विशंबर प्रसाद निषाद, संतोष कुमार, संजय सिंह, अशोक सिद्धार्थ, आदरणीय राम विचार नेताम जो स्वयं छत्तीसगढ़ से हैं, इन सभी ने अपने अपने सुझाव को शामिल करते हुए इस विधेयक पर अपना समर्थन दिया है। फूलो देवी नेताम छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र से आती हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ की कई जातियों को जो अनुसूचित जनजाति में शामिल करना है, उनके संबंध में यहाँ पर कहा। मैं उन्हें आश्वस्त करती हूँ कि हमारी सरकार, हमारा मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में माननीय अर्जुन मुंडा जी स्वयं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उड़ीसा सहित भारत देश के जिन राज्यों से भी आदिवासियों की सूची में शामिल करने वाले जातियों के जो प्रस्ताव हैं, उन सब पर हम बहुत गंभीर हैं और इसके लिए बार बार हमारी बैठकें हो रही हैं और जो प्रपोजल हैं, जो प्रस्ताव हैं, जो अधूरे हैं, इसके लिए हम राज्य सरकारों से लगातार बात कर रहे हैं। हमारी बहन फूलो देवी नेताम जी छत्तीसगढ़ के संबंध में कह रही थी। मैं फूलो देवी नेताम बहन को ये कहना चाहती हूँ कि सन 2003 में जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़ की क्या दुर्दशा थी, क्या स्थिति थी, ये देशवासियों से छिपा नहीं है। 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2003 से लेकर 18 तक हमारी सरकार ने वहां पर छत्तीसगढ़ वासियों के विकास के लिए बहुत काम किया और जो बस्तर क्षेत्र है, सरगुजा क्षेत्र है, वहां पे नक्सली उन्मूलन के लिए बहुत ईमानदारी के साथ प्रयास किया और काम किया। प्लीज नो, नहीं, आप बिना इजाजत के बोल रहे हैं। प्लीज बिना इजाजत के बोले। पहले वहां पर 16 जिले हुआ करते थे। हमने बस्तर क्षेत्र में बीजापुर और नारायणपुर को पहले जिला बनाया और इसके साथ
2011-12 में एक साथ हमने 9 जिलों का निर्माण किया और इसके साथ साथ जहां भी पब्लिक की डिमांड आई हमने एक साथ 49 तहसील का निर्माण किया। आज पहले छत्तीसगढ़ को कोई नहीं जानता था, लेकिन जिस प्रकार 15 सालों में वहां का विकास हमारी सरकार ने किया, आज छत्तीसगढ़ देश के नक्शे पर दिखाई देता है और हर एक क्षेत्रों में वहां पर विकास हुआ। आज मैं जरूर कह सकती हूँ कि 3 सालों से वहां पर विकास ठप है। अभी एक छोटा सा बाई इलेक्शन हो रहा है, विधानसभा का चुनाव हो रहा है। उस चुनाव में एक साल्हेवाड़ा करके ट्राइबल क्षेत्र है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक छोटे से चुनाव को जीतने के लिए वहां के मुख्यमंत्री ने, आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने जनता को एक प्रलोभन दिया है कि आपने यदि खैरागढ़ का चुनाव हमें जिता दिया तो 24 घंटे के अंदर हम जिला बना देंगे। जिस प्रकार से आपने 2018 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सामने कहा था कि हमारी सरकार बने, माननीय मंत्री जी की जब आप रिकॉर्ड पे जाना चाहे तो प्लीज। इस तरह से आपने छत्तीसगढ़ में एक छोटे से चुनाव में जिला बनाने के लिए आपने घोषणा की है। साथ में हमारी बहन ने कहा कि 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और त्रिपुरा में भी 2023 में चुनाव होने वाला है। तो चुनाव को ध्यान रखते हुए आपने वहां के लोगों का वोट लेने के लिए ये विधेयक को लाया है। देखिए, एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। जैसे कल झारखंड का हमने प्रस्ताव पारित किया। झारखंड की जनता देश की आजादी के बाद से, वहां की जो जातियां हैं जिनको कल हमने शामिल किया, और देश की आजादी के बाद से इंतजार कर रही थी कि हम कब सरकार हमें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करे। तो इस प्रकार से त्रिपुरा की जनता भी, त्रिपुरा की जो डारलोग जनजाति है वो भी इंतजार कर रही थी। और ये ऐसी सरकार है बहन जहां पर जनता की सुनी जाती है और जनता की उम्मीदों को यहाँ पर पूरी की जाती है। तो आपने जो छत्तीसगढ़ के जनजातियों की चिंता की है उसको बहुत जल्दी हमारी सरकार विधेयक के रूप में लेकर आएगी। शांतनु सेन जी ने अपने सुझाव के साथ साथ आदिवासियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में अपनी चिंता जाहिर की है। मैं जरूर कहूंगी इस बात को कि पश्चिम बंगाल में जो जनजातीय समाज के लोग रहते हैं, भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनकी उन्हें जरूरत है, लेकिन आपकी सरकार की वजह से, पश्चिम बंगाल की सरकार की वजह से वहां पर जनजातियों को उनका हक हासिल नहीं हो पा रहा है। जो योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से हमारे जिन भी माननीय सदस्यों ने अपने अपने प्रदेश की जो जातियां हैं जो अनुसूचित जनजाति में शामिल होना चाहती है, ऐसे जनजातियों के संबंध में आपने अपने विचारों को यहाँ पर रखा है। मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी कि राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर हमारी सरकार इस पर विचार कर रही है और जैसे ही सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी हम एक एक करके उन प्रस्ताव को सदन के माध्यम से पारित करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे विषय आए, बहुत कम समय में कई सदस्यों ने अपनी अपनी बात को रखा। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि किसी भी जाति के विकास के लिए, किसी भी समाज के विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए सबसे पहले जरूरी ये होता है कि शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए। तो हमारी सरकार ने ट्राइबल क्षेत्रों में जो बच्चे रहते हैं उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल का गठन किया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 2013-14 के पहले ये एकलव्य मॉडल स्कूलों की संख्या लगभग 167 थी और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है सदन को बताते हुए कि 2021-22 में एकलव्य मॉडल स्कूलों की संख्या 679 है और एक एक स्कूल में 480 बच्चे सीबीएसई कोर्स के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। 6वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई वहां पर होती है और उन बच्चों की बहुत इच्छा होती थी कि जिन स्कूलों में हम पढ़ाई कर रहे हैं उन स्कूलों की बिल्डिंग भी बड़ी होनी चाहिए, वहां पर प्ले ग्राउंड होना चाहिए
मैं सदन को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब एकलव्य मॉडल स्कूल के जो बिल्डिंग है, पहले हम 20 करोड़ का बनाया करते थे, आज 38 करोड़ के एक बिल्डिंग का निर्माण वहां पर होगा। और जिस तरह से जवाहर नवोदय विद्यालय के स्कूल रहते हैं, सेंट्रल स्कूल की बिल्डिंग रहती है, ठीक उसी तर्ज पर आज हमारे स्कूल होंगे। और इसी तरह से हमारी बहन कह रही थी कि हमारा बजट कम हो गया है। बजट हमारा कम नहीं हुआ है। पहले 2013 और 14 में मैं जरूर कहूंगी कि 19,437 करोड़ ट्रैवल मंत्रालय का बजट था, लेकिन आज 2022-23 का जो बजट है 87,585 करोड़ रुपए का बजट है। Please, let her complete. Please. No, please, let her complete. Yes, let her speak first. Let her speak. Please. Let her continue. ट्रैवल क्षेत्रों के विकास के लिए जो ट्रैवल सब प्लान है 2013-14 में ये 21,525 करोड़ हुआ करता था, आज 85,930 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान हुआ है। वनधन विकास ये मेरा सारे सदस्यों से आग्रह है कि मिनिस्ट्री पर बोले। सभी सदस्यों से मैंने बार-बार आग्रह किया। समाज के लोग हैं, प्लीज वन क्षेत्रों में रहते हैं और आदिवासियों का जीवन जंगल के ऊपर निर्भर है। ऐसे वनवासियों के वन विकास केंद्र की मैं चर्चा कर रही हूँ। आप जो भी माननीय सांसद ट्रैवल क्षेत्रों में रहते हैं, जहां पर आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, जिनका जीवन जंगल पर आधारित है, ऐसे माननीय सदस्यों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय हमारी पार्टी ने कहा था कि हम पूरे देश भर में 50,000 वनधन विकास केंद्र खोलेंगे। आज 36,000 से भी ज्यादा वनधन विकास केंद्र। देखिए, 2 साल कोरोना में के कारण हमारा काम जरूर प्रभावित हुआ, लेकिन आज 2022 में 36,000 से भी ज्यादा वनधन विकास केंद्र खुल चुके हैं और कई लाख जो ट्राइबल है वो उनको इसका लाभ मिल चुका है। एक वनधन विकास केंद्र में 300 लोगों की संख्या होती है। 60% उसमें ट्राइबल रहते हैं, 40% अदर समाज के लोग रहते हैं और उनके आसपास जो भी वनोपज मिलते हैं, उन वनोपज को संग्रह करके उसका मूल्य बढ़ाने के लिए, उसके मूल्य संवर्धन के लिए उनको देखिए ट्रेनिंग दी जाती है। उनके लिए एक बिल्डिंग का भी निर्माण किया जाता है और वो जिस सामान का निर्माण करते हैं उसकी अच्छी पैकेजिंग होती है, लॉन्चिंग होती है, उनके लिए मार्केट की व्यवस्था की जाती है। तो उनके उद्यम के लिए, उनके रोजगार के लिए जो ट्रैवल कभी मजदूर हुआ करते थे, आज हमारे सरकार की मंशा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हम उन मजदूरों को मालिक बनाएंगे और उन्हें मालिक बनाने के लिए ट्रैवल मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में वनधन विकास केंद्रों के माध्यम से काम कर रहा है। और माननीय मंत्री जी कंक्लूड करिए समय। इस प्रकार से हम एक और उनके विकास की चिंता कर रहे हैं। अभी इस बजट में हमारी सरकार ने ट्राइबल क्षेत्रों के विकास के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम लाया है, उसका बजट प्रावधान हुआ है और ऐसे गांव को हमने चुना है जहां की ट्राइबल जनसंख्या 50% से ऊपर है। तो हमारे मंत्रालय ने ये सर्वे किया कि ऐसे कितने गांव हैं, तो पूरे देश भर में लगभग 1,47,000 से भी ऐसे 50% ट्राइबल बाहुल्य वाले गांव हैं। उसमें से 36,000 गांव को हमने इस वर्ष लिया है और उन ग्राम पंचायतों में 100% विकास के लिए, जैसे कुछ राज्य सरकार भी उसमें काम करेगी और जहां जहां पर भी गैप रह जाएगा उस गैप फिलिंग के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के माध्यम से काम करेगी। आज त्रिपुरा के इस विधेयक को पारित कराने के लिए हमारे राज्यसभा के हमारे बहुत अनुभवी माननीय सांसदों ने अपनी बात को रखा है। मैं प्रस्ताव करती हूं कि इस विधेयक को पारित कर दिया जाए। The question is that the Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2022 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted.
We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Srimati Renuka Singh Saruta to move that the bill be passed. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Now the Criminal Procedure Identification Bill 2022. Shri Amit Shah to move a motion for consideration of the Criminal Procedure Identification Bill 2022. माननीय अमित शाह. उपसभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दांडिक मामलों में शनाख्त और अन्वेषण के प्रयोजन के लिए सिद्ध दोष और अन्य व्यक्तियों का माप लेने को प्राधिकृत करने और अभिलेखों का परीक्षण करने और उस संबंध और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए. महोदय, आज एक महत्वपूर्ण विधेयक लेकर मैं सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसको 4 तारीख को लोकसभा ने पारित किया है. इस विधेयक का उद्देश्य एक 100 साल पुराने विधेयक में आज के जमाने के अनुरूप टेक्नोलॉजी का जो बदलाव हुआ है उसका समावेश करना, इन्वेस्टिगेशन को बल देना और दोष सिद्धि के प्रमाण को ज्यादा से ज्यादा हो सके इस प्रकार ये डेटा को स्टोरेज कर कर, इसका एनालिसिस कर कर, इसका उपयोग कर कर दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाना. सभापति महोदय, जब तक किसी भी देश में दोष सिद्धि का प्रमाण नहीं बढ़ता है, तब तक कानून और व्यवस्था की परिस्थिति सुधारने के सभी प्रयास विफल हो जाते हैं. पुलिस या कानून प्रवर्तक एजेंसियां कितने भी लोगों को कानून के दायरे में पकड़ कर लाए, मगर जब तक अदालतों में उनके दोष को सिद्ध नहीं किया जाता, तब तक उनको सजा नहीं होती. और कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो स्वभावगत रूप से अपराध करते हैं. अपराध को जिन्होंने पेशे के रूप में भी स्वीकार किया है, ऐसे अपराधियों को जब तक सजा नहीं कराते, ये सिलसिला टूटता नहीं. दूसरा, जब तक अपराधियों को सजा नहीं होती है, अपराध करने से सजा होती है, संदेश भी समाज के अंदर नहीं जाता. और जब तक अपराधियों को सजा नहीं होती है, कानून के अनुसार जीने वाले समाज के बहुत बड़े तबके में कानून और व्यवस्था और सरकार के प्रति, संविधान के प्रति आस्था की भावना को हम खड़ा नहीं कर सकते. इसलिए निहायत जरूरी है कि दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाया जाए. और इसके लिए अंग्रेजों के समय में बना हुआ एक पुराना कानून आज के समय में ऐसा लगता है कि ये पर्याप्त नहीं. देश के विधि आयोग ने बंदी सेना अधिनियम 1920 पर 1980 में अपनी 87वीं रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी. और उसके अंदर ये जरूरत महसूस की गई विधि आयोग के द्वारा कि 1920 के दांडिक जांच में आधुनिक रुझानों के अनुरूप 1920 के कानून को बदलने की जरूरत है. विधि आयोग ने यह भी कहा
कि पहचान के प्रयोजन से संकलित किए जाने वाले डेटा की श्रेणियों को सीमित नहीं रखना चाहिए। उन्नत वैज्ञानिक खोज से लिए जाने वाले सारे मापों की सूची में निरंतर वृद्धि होनी चाहिए। इसके साथ ही विधि आयोग ने यह भी अनुशंसा करी कि जिन व्यक्तियों के माप लिए जा रहे हैं उसके दायरे को भी विस्तृत करना चाहिए। और कई सारे जजमेंट्स ने भी इसी प्रकार की भावना राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के सामने अलग अलग समय पे की है। इस विषय वस्तु को ध्यान में रखकर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये सारे राज्यों ने कई परिवर्तन, समयानुकूल परिवर्तन किए, परंतु इस पर समग्रता से विचार कर माप रखने की आधुनिक से आधुनिक तकनीक से माप का डेटा स्टोरेज हो, अच्छे से अच्छे सॉफ्टवेयर से इसका एनालिसिस हो, इसके आधार पर गुना करने की मानसिकता, हर जिले में किस प्रकार के गुना होते हैं, हर प्रदेश में किस प्रकार के गुना ज्यादा होते हैं, और इसके आधार पर वो जिले और प्रदेश की गुना को रोकने की पुलिस की रणनीति बन पाए, इस प्रकार की एक व्यवस्था, इसको कानूनी स्वरूप देने के लिए मैं यहाँ विधेयक लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसके बारे में विस्तृत मैं बताना चाहूंगा, मगर पहले सभी सदस्यों के अभिप्राय सुनने के बाद इनसे आए हुए सारे सुझावों, उनसे आए हुई सारी क्वेरीज को एड्रेस करते हुए मैं समापन के वक्त पर इसको विस्तृत में रखूंगा। मैं अंत में सभी सभासदों से कहता हूं कि अपने अपने मूल्यवान विचार इसके पक्ष में, विपक्ष में जो है वो यहाँ पर। धन्यवाद। मोशन मूव। There are 3 amendments by Sri Trichu Sivaji, Sri Sukhendu Shekhar Roy ji and Sri Abdul Wahab ji for reference of the Criminal Procedure Identification Bill 2022 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha. Members may move their amendments at this stage without any speech. Sri Trichu Sivaji, are you moving? I am moving the motion. Moved. Amendment moved. Mani Sri Sukhendu Shekhar Roy ji, are you moving? Amendment moved. Mani Sri Abdul Wahab ji, not present. Amendment not moved. The motion for consideration of the bill and the amendments moved thereto are now open for discussion. Mani P. Chidambaram ji. Mr. Deputy Chairman, when I rise to speak in this House, I have to remind myself that this is Parliament, the highest seat representing the sovereign power of the people. We gave ourselves a constitution. We are bound to honor the constitution. But I'm sad to say, I deeply regret to say, when a bill like this is moved and passed in this House, we are wittingly or unwittingly breaking the constitution every day. I know that this bill has been approved by the Cabinet of the Government of India. I know that this was introduced in the Lok Sabha. I've read that several suggestions were made in the Lok Sabha to amend the bill, to refer it to a standing committee, to refer it to a select committee. But I deeply regret that not one suggestion was accepted by the government. The bill has been passed as it was introduced, and I'm afraid, given the current circumstances,
it will be passed in this House also without taking into account any suggestions. What is wrong with the suggestion of my distinguished colleagues who said, refer this bill to a select committee, refer to this bill to a standing committee? If we can wait 102 years to change a bill of 1920, why can't we wait for 102 days for the bill to be brought after examination by the standing committee? What did not happen in 102 years is not going to happen in 102 days. Sir, I want to know who's taking ownership for drafting the bill. Ownership for the bill is the cabinet of the government of India. But who is taking ownership for drafting the bill? And I'll explain why this bill is extremely defective, apart from being dangerous. Firstly, sir, this House must know there are existing laws on identification of prisoners. The Criminal Procedure Code has Section 53, Section 53 capital A, and Section 54. They were introduced in 1963, not in 1920, 1963. There is the other bill which the Honorable Home Minister referred to, the Identification of Prisoners Act 1920. There is also another bill which is pending, the DNA Technology Use and Application Regulation Bill of 2019, which I believe has been reported back to the House. Now, why is the DNA Technology Regulation Bill kept pending since 2019? And why is this bill being introduced? What have you found lacking in the Criminal Procedure Code? What have you found lacking in the DNA Technology Regulation Bill, which is sought to be made up by this bill? So the statement of objection reason says, and I summarize it in 3 sentences, to expand the ambit of powers, to use modern techniques for body measurements, and 3, to provide legal sanction. And these are harmless words. The harm, the mischief lies in these sections. Let's look at these one by one. I want to ask the Honorable Home Minister and the Treasury benches, have you considered the development of law in the last 20 or 30 years, and especially since the year 2010? The Constitution is a living document. Its sole interpreter is the Supreme Court of India. We can make law, but what we made is interpreted by the Supreme Court. While the privilege of making a law belongs exclusively to Parliament, the power to interpret the law exclusively belongs to the Supreme Court. That is the division of powers. Has the government taken into account 2 historic judgments of the Supreme Court in the last 20 years, last 10 years? The first is a judgment of Selvi, was a state of Karnataka, pronounced on 5th of May 2010. And the second is the Justice Puttaswamy, was a Union of India judgment pronounced on 24th of August 2017. Selvi says, and I'm not going to quote copiously, Selvi says, while examining narco-analysis, polygraph test, and brain electrical activation profile, commonly called BEEP. Kindly remember these 3 words because I will refer them again. Narco-analysis, polygraph test, commonly known as lie detector test, and brain electrical activation profile.
And the court said, in our considered opinion, subjecting a person to the impugned techniques, these three techniques, is an involuntary manner violates the prescribed bounds of privacy. In the light of these conclusions, we hold that no individual shall be subjected to any of the techniques in question, whether in the context of investigation, in criminal cases or otherwise. Since 2010 in this country, the law in this country is narco-analysis, polygraph test, and beep are unlawful, unconstitutional. They violate liberty and privacy. The second judgment in Puttaswamy's case said, an invasion of life or personal liberty must meet the threefold requirement. One, legality, which postulates the existence of a law. Two, need, defined in terms of a legitimate state aim. And three, proportionality, which ensures a rational nexus between the objects and the means adopted to achieve them. This law, which the Honorable Home Minister introduced, goes directly against the pronouncement in Selvi, and it fails every one of the three tests laid down in Puttaswamy. Let's reflect on what we are doing. What we think we are doing is not final. It has to pass the test of the Constitution. It has to pass the test of the Constitution as interpreted by the Supreme Court. And with open eyes, we are considering a law which directly violates, as I will demonstrate, directly violates Selvi and directly violates Puttaswamy. Sir, liberty and privacy are two of the most cherished rights in a democracy. Let me repeat it. There's nothing more important to the dignity of a human being than liberty and privacy, which is why the law is developed all over the world in democratic countries to protect liberty, to protect privacy. Sir, derogation of any right is the starting point of denial of that right. Erosion of any right is a starting point of extinguishment of that right. We think we are only derogating, but eventually this will lead to denial and destruction of liberty and privacy. We think we are only eroding at the fringes, but this will lead to extinguishment of all rights. Let's look at the provisions one by one. There are 4 key provisions, and I will take 2 minutes on each provision. And under each provision, I will ask a question, and I sincerely hope the Honorable Home Minister will answer the question directly and specifically. First, look at Section 21B. Section 21B of the Act allows the police and the prison authorities to take measurements. The word measurement is defined to include biological samples and their analysis, behavioral attributes, or any other examination in Section 53, 53A, and 54 of the Criminal Procedure Code, which refers to such other tests. I hope the link is clear. Measurements in this law, this bill, has 3 components, but the third component refers to the Criminal Procedure Code, which says such other tests.
So the such other tests must be read into this section. Now I ask a specific question, and I pray for a specific answer. Do these measurements include narco analysis, polygraph test, brain electrical activation profile, and psychiatric examination? If they are not included, let us make it clear. If they are included, let us make that clear. Each one of these is unlawful. And if by measurements, if by biological samples and their analysis, by the phrase behavioral attributes, and by the phrase such other tests, you are including narco analysis, polygraph, beep, and psychiatric examination, this bill is unconstitutional. Let's take the next section. Section 3. It starts by saying any person. That includes all of us. Any person. Now tell me, I asked honorable members, I wish I could speak in a lighter vein. I asked all members in this House, active political person, trade unionist, social activist, a progressive writer, has anyone not violated any law in this country? When the police say there's section 144, you can't proceed, and you take 2 steps forward, you're violating a law. If there's an order that you shall give security for good behavior, and you don't give security, you're violating a law. And the punishment for many of these offenses is 200 rupees fine, or 500 rupees fine, or imprisonment up to 1 month, or fine. I ask most humbly, is there anyone in this House who's not violated a law? I asked the Honorable Home Minister, who's had an active political career, have you never violated any law? Now, what does the section say? The section says, any person convicted of an offense punishable under any law. So even if you are convicted of an offense where the punishment is 100 rupees, this law applies. If a person is ordered to give security under section 107, 108, 109, 110, 117 for keeping the peace, for good behavior, you are violating the law. If you are arrested in connection with an offense punishable under any law, if a bus driver strays from the bus lane in Delhi, he is violating a law. Detained under any preventive detention law. Is there any member of the Communist Party of India, the Communist Party of Marxist Party, who's never been detained? Since A.K. Gopalan, preventive detention laws are there in this country. And this is any law, any punishment, detention, not a charge, arrest, no charge, even for arrest, for detention, for order to give good behavior, any law, if you are arrested, this law applies. So tomorrow, if the members of the All India Trinamool Congress or the Aam Aadmi Party or the Congress Party march from Gandhi statue to Vijay Chowk, and the police stop you, they can arrest you. The moment they arrest you, they will take all your fingerprints, your DNA samples, or behavioral samples. That is the law. Let the Honorable Home Minister say, this is not the law. These sections will be excluded, then exclude them. And
The question is there any person in this house who can say, I've never violated any law in this country, or I will never violate any law in this country? We are not talking about heinous crimes. We are talking about simple laws like order to give good behavior. The third section is section 4. Section 4 says, store, preserve for 75 years and share and disseminate such records with any law enforcement agency. My third question is, who is the law enforcement agency? A law enforcement agency is not defined. Literally, simple, plain English language. Law enforcement agency is any authority enforcing any law. Now, what does that mean? A panchayat enforces the Panchayat Act. A municipal officer enforces the Municipal Act. The health inspector enforces the Food Safety Act, Food and Drugs Act. So, a panchayat is a law enforcement agency. It doesn't define law, it doesn't define agency. So anybody who's got a law to enforce the law, to apply the law, to implement the law, will get the measurements. He can ask for these measurements and it will be given to him. Is this the intention of section 4? Why don't you define law enforcement agency? Why do you say law enforcement agency? Any agency which enforces any law will be covered. The last is section 5. Now, a person is required to give these measurements. That is the first section. Section 5 says, magistrate may direct measurements to be taken, and such person shall allow measurements to be taken. If he refuses, police officer may take the measurements, and if he obstructs the police officer, he is punishable for an offense under section 186. I ask myself, can these measurements be taken without my consent? Can these measurements be taken against my will? It's not clear whether section 2, which obliges a person to give the measurements, read with section 5, which empowers a magistrate to pass an order directing him to give the measurements, if both are read together, then this is involuntary confession. This is involuntary testimonial compulsion. This is directly violative of Article 20 and Article 21. This directly violates Selvi. This directly violates Puttaswamy. Finally, sir, there are more questions. Has the government been told that the European Court of Human Rights has held that fingerprints, DNA profile, and cellular samples and their retention, storage without consent violates human rights? That's the European Court's ruling. Does the government know that there is no scientific basis, and I say this on authority, there's no scientific basis to presume that any of the measurements, including handwriting, fingerprints, is unique to a person? Does the government recall that UIDAI filed an affidavit saying 6% of fingerprints under the Aadhaar scheme failed, the results failed? Does the government know that in the iris scan, the UIDAI admitted that the failure rate is 8.54%? Does the government know that the President's Council of Advisors on Science and Technology in the USA has advised the United States government that DNA analysis are neither valid nor reliable?
This is the state of science today. And you are saying science is impelling us to pass this bill. Sir, this bill is unconstitutional. This bill is illegal. We are deceiving ourselves if we believe that we are passing a bill. This bill has a huge net which can embrace anyone in this country. And you know what happens when a law of this is applied. The worst sufferers will be the disadvantaged, oppressive, and the oppressed and the poor. Sir, I oppose this bill. I ask this House to reflect. Since we won't have time to reflect today, I beg of you, send this to a standing committee or send this to a select committee and let them examine and come back. What has waited for 120 years, 102 years, can wait another 102 days. Thank you. Honorable Shri Mahesh Jethmalani. Honorable Chairman, sir, I thank you profusely for permitting me to speak in support of the Criminal Procedure Identification Bill 2020.